हैदराबाद में जीएचएमसी के फंड से 6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए चिकड़पल्ली ता दोमलगुड़ा लिंक ब्रिज इफ्तिताह जिला इंचार्ज वजीर पुरम प्रभाकर और मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने किया। ये ब्रिज हुसैन सागर सरप्लस नाले के ऊपर तामीर किया गया है, जिससे मुकामी ट्रैफिक को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, एमएलए एम गोपाल, डिप्टी मेयर श्रीलता, कमिश्नर आरवी कर्णन, एडिशनल कमिश्नर रघु प्रसाद, जोनल कमिश्नर रवि किरण और मुकामी कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। लिंक ब्रिज के आगाज के बाद चिकड़पल्ली से अशोक नगर और दोमलगुड़ा की जानिब गाड़ियों की आमदोरफ्त मजीद आसान हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक के मसाइल में नुमायां कमी आने की तवक्को है। हुकाम ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना और शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करना है। मुकामी अवाम ने भी इस इक़दाम का खैर मकदम किया और इसे इलाके की तरक्की की जानिब एक अहम कदम करार दिया। రోడ్లు కావచ్చు, డ్రైనేజీ కావచ్చు, శానిటేషన్ కావచ్చు, లైట్లు కావచ్చు, పార్కులు కావచ్చు, ఇతరత్ర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కలుపుకొని హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రజలకు మెరుగైనటువంటి జీవితం సౌకర్యాన్ని కలిగజేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోబడతాయి. ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాధాన్యతగా ఈ హైదరాబాద్ స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్గా ప్యూర్ అంటే రింగ్ రోడ్ లోపల ప్రాంతం కలిపిన తర్వాత ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నగరంగా ఉన్నప్పుడు దానికి అనుగుణంగా సౌకర్యాలను కలిగజేసేటువంటి అంశం పట్ల కూడా ప్రభుత్వం చాలా చిత్తశుద్ధి. तेलंगाना असेंबली के दूसरे दिन का इजलास हंगामे से शुरू हुआ। रियासत में किसानों को यूरिया की कमी के बाइस मुश्किलात का सामना करने पर बहस की दरखास्त करते हुए अपोजिशन पार्टी बीआरएस ने असेंबली में भरपूर एहतजाज किया। इजलास के आगाज ही में बीआरएस के एमएलए हाथों में प्लकार्ड लेकर असेंबली हाल में दाखिल हुए और बुलंद आवाज से नारे लगाते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बीआरएस लीडरान ने इल्जाम आयद किया कि ज़रई सीजन अहम मरहले में है, मगर हुकूमत किसानों को वक्त पर यूरिया फराहम करने में नाकाम है, जिससे वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि यूरिया की कमी पर फौरी तौर पर बहस शुरू की जाए। కాంగ్రెస్ వచ్చింది కాంగ్రెస్ వచ్చింది కాంగ్రెస్ వచ్చింది हैदराबाद के नामपल्ली में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का इफ्तिताह हुआ। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के हाथों एग्जीबिशन का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एग्जीबिशन सोसाइटी के सदर व रियासती वजीर श्रीधर बाबू, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर व दीगर भी मौजूद थे। इफ्तिताह के मौके पर अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आलमी सतह पर बदलते हालात के पेश नजर एग्जीबिशन सोसाइटी को भी आलमी मेयार तक पहुंचाने की जरूरत है और इसी दौरान उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने सोसाइटी की तरक्की के वादे तो किए, लेकिन उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया। मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्रीधर बाबू और हैदराबाद इंचार्ज वजीर पुरम प्रभाकर के ताउन से नुमाइश सोसाइटी को वसअत देने और इसे खुद कफील बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़रा ने भी खिताब किया। రాష్ట్రాల నుంచి 1000కి పైగా స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని హైదరాబాద్ అదేవిధంగా మొత్తం తెలంగాణ ప్రజలందరికీ వివిధ రాష్ట్రాల్లో దొరికే ఉత్పత్తులను ఒకే కాడికి ఒకే వేదిక కిందకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికీ అందుబాటులో ఉంచేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి ఈ ఎగ్జిబిషన్ నుమాయిష్ సొసైటీ సభ్యులందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతూ తప్పకుండా హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన నుమాయిష్ కమిటీకి ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి అధ్యక్షులు అదేవిధంగా ఇతర మంత్రులతో సమీక్షించి మీకు సంబంధించిన సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. Sir, I want to just bring it to your notice for conducting this mega event which runs for 46 days. We have constituted 34 subcommittees. 34 different subcommittees, and there will be security personnel for taking care of security. We all know that, it's a customary practice that we start this Numaish, this exhibition,
All India 85th, we are going to start today on inauguration by our Deputy Chief Minister. And we have a rich history and legacy of this Numaish. You know, it dates back to 1938, where Usmania graduates have started this journey. They have started this journey with a vision. The vision of safeguarding the cultural autonomy. The vision to see that the different cultures conglomerate here. The vision that no religion, no caste can bar our Hyderabad tradition and culture. Exhibition Society, on this occasion of this inaugural function, that too on the first of every new year we do, as a ritual, as a formality, as a festival, we call it a Numaish. And our senior colleague, Honorable Deputy Chief Minister Sri Mallu Bhatti Vikramarka Garu, Hyderabad District In Charge Minister Honorable Ponnam हैदराबाद में सर्दी की लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की मोटी तह छा गई है। आज इस सुबह हिमायत नगर से मौसूल होने वाले मनाजिर में देखा जा सकता है कि सुबह के वक्त धुंध ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था, जिससे हद निगाह काफी हद तक कम हो गई है। सर्द मौसम के बायस सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी मुतासिर हुई और राहगीरों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर ट्रैफिक सुस्त रवि से चलती दिखाई दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की ये लहर आइंदा चंद दिनों तक बरकरार रह सकती है, ताहम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मामलात जिंदगी जारी रखे हुए हैं। और जिले वरंगल में भी सर्दी की शदीद लहर के बायस धुंध की मोटी तह छा गई है। सुबह के औकात में धुंध के बायस हद निगाह काफी हद तक कम हो गई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर रही। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई और राहगीरों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सर्द मौसम के सबब गर्म कपड़ों पर लिपटे नजर आए, जबकि कई इलाकों में मामलात जिंदगी सुस्त रवि का शिकार रही। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने कहा कि मुल्क की आवाम ईवीएम पर एतमाद रखते हैं। कर्नाटक हुकूमत की एक हालिया सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रियासत कर्नाटक में ज्यादातर वोटर्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतमाद रखते हैं। उन्होंने ये बात हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। रामचंद्र राव ने कहा कि आवाम की बड़ी तादाद ईवीएम के जरिए वोटिंग के अमल को शफाफ, महफूज और काबिल एतमाद समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट उन इल्जामात को मुस्तरद करती है जो कुछ सियासी जमातें इंतखाबी निजाम पर सवाल उठाते हैं। People of this country have utmost faith on the EVMs. I think in the world there are many countries, and India is one of those few countries that elections are held in a large scale on EVMs. And even the Honorable Supreme Court has said that there is nothing technically or any scientifically wrong with the EVMs. It can't be tampered, and because of that, VVPAT has also been introduced. So the Karnataka recent elections of 2-3 municipalities where the elections were held on ballot paper, there also Bharatiya Janata Party won with huge margins. Now the Congress must answer. When they lose, they blame EVMs, and they win, they don't blame EVMs. Now what about the ballot papers also? In ballot paper also Congress lost very badly. So people in Karnataka or people in elsewhere in the country have faith in EVMs. Congress has no issues with them. So therefore they take up the issue of EVMs, and also because they want to cover their failures with the EVMs. They want to cover their failures with the voter list. They want to cover their failures with the issue of SIR. They don't have any issue against the government because the government is running smooth, the government is catering to the needs of the people, government is corrupt free. So therefore the Congress and the India Alliance have no issues except these frivolous issue which waste the public money. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम कराने में चीन के किरदार के दावे को तेलंगाना बीजेपी ने सरे से खारिज कर दिया।
बीजेपी लीडर प्रकाश रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत कई बार इस तरह के दावों को मुस्तरद कर दिया है। ये सिर्फ बयानबाजियां हैं, इसमें तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरकजी हुकूमत हमेशा से तैयार है। Then Owaisi, the staunch follower of Congress Party, probably Congress Party, once again gave a statement that believing the statement of China External Affairs Minister, a third party mediation was there during the Operation Sindoor. Many a times Government of India, the Minister of External Affairs, our Defence Ministry, even our Prime Minister and our security forces many a times clarified that there was no third party mediation during the Sindoor operation in Pakistan. It was between Pakistan and India operated to kill to disseminate the terrorists on the Pakistan side. So we have planned for the Operation Sindoor. But again and again, if the Trump says something, again Indian political system reacts. If any foreign affairs minister says something, foreign country minister says something, our political system is reacting. They don't believe Indian government, and they believe only foreign government system, which is unfortunate. Once again, Owaisi statement is unfortunate.